Hi everyone, my name is Ankita and welcome to my channel. हाय गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब होप यू गाइस आर डूइंग वेल मैं भी ठीक हूँ एंड आज है स्टार्ट ऑफ येट अनदर वीकेंड सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट दिस व्लॉग स्टार्टेड गुड मॉर्निंग ब्राइट सनी मॉर्निंग वहाँ दिख रहा है इसका आज काफी फुर्सत से उठे हैं हम So it's about 11:15 on the clock and अभी तक मेरा breakfast भी नहीं हुआ है सुबह से actually मैंने कुछ किया नहीं है I've just gotten up showered and that's it because आज हमारी house help I think she was here by 9:40ish I had just showered and come like in 10 minutes वो आ गई थी तो breakfast तो हो नहीं पाया because घर बहुत chaos में रहता है जब हाउस हेल्प आती हैं तो पूरा मतलब साफ सफाई होती रहती है बर्तन वगैरह धुलते हैं सो कुछ भी नहीं हुआ सो शी इज जस्ट लेफ्ट एंड माय पेरेंट्स हैव आल्सो लेफ्ट दे हैव गॉन आउट सो आई हैव द होम टू माई सेल्फ आई एम होम अलोन येट अगेन सो yeah, first off, I think we'll figure out what to have for breakfast. I was thinking ki, I want to have boiled eggs and avocado toast with a side of fruits, but टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा कुछ बनाने की इच्छा हो नहीं रही है एंड बट स्टिल एटलीस्ट बॉइल्ड एग्स तो खा ही सकती हूँ मैं सो मे बी आई जस्ट पुट द एग्स फॉर बॉइलिंग एवोकाडो टोस्ट का देखते हैं आई हैव गॉटन द एवोकाडो बट अभी बनाने की रियली इच्छा नहीं हो रही है सो लेट्स फर्स्ट गो एंड पुट द एग्स फॉर बॉइलिंग फिर देखते हैं पानी को बॉयल होने के लिए रख देंगे and once it is comparatively hotter we'll add in the eggs. For some reasons जब भी मैं eggs directly डालती हूँ वो crack हो जाते हैं so I thought I will put the eggs with the help of this. I think 10 minutes, 12 minutes, and we should be good. Let me keep this. Alexa, set a timer for 12 minutes. Okay, timer is set. 2 more minutes to go. Quick question, as women, I think we go through a hell of emotions, hell of stress. We are overthinkers, and how do handle? Not as women, like as human beings also, right? Like how do you handle when you have too much stress, you have some issues to sort out, या कुछ काम अटका हुआ है उसको it's just not getting through. What do you do during that time? Because I'm such an impatient person, तो मैं इतना ओवरथिंक करने लगती हूँ एंड आई रन थ्रू अ हेल ऑफ इमोशंस मतलब आई जस्ट stress eat. I am a stress eater and I just fall back on chocolates. I know that that's not something which is very healthy, but somehow it helps. Like थोड़ा मन डाइवर्ट हो जाता है मन खुश हो जाता है of course because chocolate and dark chocolate के अपने properties होते हैं जिसकी वजह से ये होता है. But let me know when you have these plethora of emotions and things happening in your life, how do you handle it? Like I want to be that calm person who is able to handle anything. Like on the exteriors I'm actually calm, like मैं अपनी मम्मा का सर बहुत खाती हूँ, but on the exterior I'm still calmer, but I know that there's a rush of emotions that is going through, and I just fall back on eating, not eating anything, I fall back on eating
specifically sweets, तो जिससे मेरा of course weight put on हो जाता है, and of course it has these other repercussions also, right? So yeah, so itna bol ke bhi abhi I think I'm going to order in something from Big Basket because मेरा junk का जो पूरा stock है वो खत्म हो गया है, and I need to get that refilled, and now is a good time to get that refilled. So yeah, but anyway, this is a very serious topic, you know. But as man, women, how do you handle this, right? Because women have their ways, like you know, they'll cry it out, they'll talk it out, or you know, they'll stress eat like me. I'm not too much of a talker, so I don't share as much with my friends because I feel that you know, pata nahi, it's just with my mom that probably I share a lot because she keeps poking. You know, she's that person who will try and get everything out from you, and then you might regret it later. Zyada sach mama papa ko bolna nahi chahiye because she gets everything, and then that can be used or you know cannot be used against you in future incidents, but nevertheless she just gets out everything from me. But yeah, but let me know what you guys do you talk to your friends? I used to journal as well, or you know stress eating like me. ये क्या करते हो आप, मतलब अपने emotions या overthinking ये सारी चीजों को control करने के लिए? Healthy वगैरह, you know, those things sound very good. Oh, the eggs are done. Let's sort that out first. Alexa, stop. हाँ, so the question, back to the question कि आप क्या करते हो? Let me know in the comments कि आप क्या करते हो when there is a rush of emotions. I think men and women both have different ways to handle it. Women probably are very explicit in telling that hey, I overthink, I stress eat, I journal, I do this, I do that. But I'm not sure about men because you know men के लिए इतना you know the society has been carved out in such a way that I don't know, a lot of things probably they are not able to do freely. But yeah, do let me know in the comments that you know what exactly do you guys do and handle these kind of stress, or you know there are no major issues. I don't have any issues that is running in my head, but some random thought, some random problem will just make house in my head, and you know I'll be just overthinking कि ये क्यों नहीं हो रहा है, you know why is this not happening, or you know बहुत सारी चीजें हैं. So you know I just keep rethinking, plotting every probability in my head. Possibly this could be the reason, possibly that could be the reason. Of course at the end we fall back कि हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, and I'm a very strong believer of that, to be very honest, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, and if something is not working out also it's something that is you know bigger good that is going to come out of it, and if something is working out take it as a blessing from God. So yeah, let me know in the comments. मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ, but yeah, do let me know in the comments. Yeah, it's done. The eggs have started to crack. It's done. So we have the avocado. It looks ripe. Okay, perfect. डालेंगे इसमें नमक, पेपर, this should be good. अब हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे and then we'll add in the veggies.
पास इन अ बिट। ये अच्छे से मैश हो गया है। अब इसमें जाएंगे ऑफ कोर्स सारे वेजीज। ये क्या, धनिया पत्ता, खूब सारा प्याज। कैन समवन टेल मी प्याज का दाम क्यों बढ़ गया है? व्हाई इज प्याज सडनली ओनली इन द रेंज ऑफ 65-70 रुपीज अ किलो, जो अर्लियर हुआ करता था 10, 12 या 20 रुपए। मिर्ची, loads of garlic, tomato, and a dash of lime. Chalo, we'll give this a good mix. This is ready. Let's get this ready to toast the bread. Distance. Mummy, देखो, I have kept distance. Mom sees my vlogs and she's so particular about this that इसके आसपास कुछ नहीं होना चाहिए because I don't know. So ये देखो, काफी distance है. I hope this is fine. If you are okay with this distance, then do like the video. Okay, I don't know why मैंने इसको ऑन कर दिया. Tell me कि अगर आपके घर में भी ये प्रॉब्लम होती है, who eats the first slice of the bread of this entire stack of bread? हमारे घर में ये हमेशा बेचारा ये और लास्ट वाला ऑर्फन ही रह जाता है. मोस्टली मेरे पापा को प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मैं और मेरी मम्मा दोनों नहीं खाते हैं वो वाला. I think my father is the most least नखरे वाले. उनके हैं नखरे खाने में काफी. He's very particular, but ये सब चीजों में नहीं है. ये सब चीजों में I think I take a lot of qualities from my mom. She's also very finicky, very cribby about ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी. So yeah, मम्मा. आज ये काफी जल्दी हो गया. अच्छी बात है, not that I'm complaining. चलो, let's assemble now. These are the toasted breads. Slices, not breads. We'll garnish this. और एक नमक भी जाना है. तैयार है हमारा ब्रेकफास्ट. I hope this is healthy enough. Last time या कभी तो when I had put a video of my breakfast of croissant with guacamole, काफी I think किसी ने comment किया था कि इतना unhealthy. So bread तो खाना मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, but at least I think I have made it healthy with the avocado and the egg. मैदा है ये. I think ये whole wheat का है, but I'm not sure. But yeah.
गुड इनफ फॉर मी, हेल्दी फॉर मी, ये कॉम्बिनेशन मुझे पसंद है. सो अभी हम इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे एंड देन वील सी व्हाट टू डू नेक्स्ट. वी विल एंजॉय विद दिस नज़ारा. अभी बज तो रहे हैं 12, बट मैं खा रही हूँ ब्रेकफास्ट. We'll put the remaining guacamole aside. मैं जितना भी कर लूँ, ये फ्रिज में रहने के बाद ना थोड़ा decoloration इसमें आ ही जाता है. So let me know what you guys do to avoid the decoloration of the avocados. I use a lot of lime. That's not helping. So, but yeah, चलो इसको फ्रिज में रख देते हैं. So it's 12:22 on the clock and I just got done with my breakfast. So अभी हम थोड़ा कुछ इधर उधर देखेंगे, chill करेंगे with seeing some series and then we'll see what to do after that. As I have started documenting, मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग्स बना रही हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि as I've started documenting, I have figured out कि क्योंकि जब आप वीडियोस पुट टुगेदर कर रहे होते हो then you'll realize कि आपके पास कभी कभी ज़्यादा कंटेंट होता नहीं है because क्या होता है ना कि आप चिलिंग के नाम पे इतना कुछ कर रहे हो, मतलब कि you just Netflixing or seeing some series, seeing some movies randomly, कि उसके नाम पे हम काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं. So when I'm actually putting the pieces together for the vlog, I realized कि यार मैं क्या डालूँ, मैं तो ऐसे ही बस सीरीज वगैरह कुछ देख रही थी. I'm not sure कि ये आपके साथ भी होता है, but now that I have started documenting, I feel I sometimes find it very difficult कि मैं क्या डालूँ vlog में. Then I was just seeing some series and I just killed like 2-3 hours just like that. So I think as kids we were taught to be very productive, like ये करो, कुछ अपनी hobbies pursue करो. It's not that I don't pursue my hobbies, but a lot of them have been lost. जैसे कि of course I read once a while, but I used to sketch, I used to paint, I used to sing. I मतलब इतना ज़्यादा आजकल नहीं हो पाता है. I used to play the synthesizer. वो सब कुछ भी टाइम नहीं होता है. ये ऑफिस के चक्कर में जब हम बोलते हैं ना कि इतना काम होता है, पूरे वीकडे तो हम हसल कल्चर में रहते हैं, सो वीकेंड को हमको अपने लिए चाहिए. सो वो अपने लिए चाहिए के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा चिल करते हैं. एटलीस्ट आई थिंक आई हैव बीन चिलिंग अ लॉट क्योंकि that realization is striking in. So hopefully I am able to get a little bit more productive from next year. ये आज का realization है, but maybe ये कुछ दिनों में न रहे. But at least I think I'm wanting to be a little bit more productive going on. So wish me luck. आज फाइनली मैंने ये स्वेटर धो दिया. दिस वाज लाइक पेंडिंग फ्रॉम मंथ्स. ये मैं सिक्किम में लास्ट पहनी थी एंड आई वाज नॉट एबल टू वॉश इट फॉर सम ऑफ द अदर रीजन. कभी बारिश हो रही है, कभी धूप नहीं है. होपफुली आज धूप साथ दे दे. वेदर लुक्स गुड. सुबह को थोड़ा ग्लूमी था बट टुडे नाउ इट्स सनी. सो होपफुली आज ये सूट जाए. आज अगेन जैसे कि मैंने पहले बताया कि पेरेंट्स हैव स्टेप्ड आउट, तो मम्मा को the mama bear has started her shopping spree. So she is like, I'm going shopping. She was again convincing me कि चलो चलो चलो, तुम नहीं जाने से मजा नहीं आता है. I was like कि नहीं, आज आप लोग जाओ, maybe next week या in this coming week मैं चलूंगी. आज बिल्कुल भी मन नहीं है, मतलब कि आज बस बैठेंगे और थोड़ा chill करेंगे, typical weekend behavior. So yeah, so I think they're gonna have a good time. I also try and have a good time by myself. Anything. Last time he was like this, he figured out electron transport and graphene. Time before that, he was making a list of who's allowed. And yeah, by the way,
we've hit 1,000 subscribers. इसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं की. I am super excited. On 2nd December, we crossed 1,000 subscribers, and thank you everybody for all the support. मतलब it means a lot. मैं काफी excited थी, but somehow मैंने कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि I was just yearning for that milestone from a very long time. काफी मेहनत भी हो रही है, but thank you so much. I'll see if I have some snippets, जो लाइव वाला होता है. शायद मेरे पास नहीं है, but I'll try and figure out कि अगर मेरे पास कहीं पर वो snippet मैंने लिया हुआ है जब वो 1,000 subscribers हो गए. But I'm super excited onwards and upwards from here on. So होपफुली आप सब अपना सपोर्ट मुझे देते रहेंगे. जो मेरे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं उनको काफी बहुत सारा थैंक यू. एंड या थैंक यू सो मच. इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. Finally, 1,000 subscribers. So it's about 1:40 on the clock. इतनी भूख तो लगी नहीं है, बट लंच में कुछ तो खाना पड़ेगा. So I'll start the prep and then अगर मन करेगा तो खाऊंगी. So I'm thinking of having soup. अभी मैंने एक बहुत अच्छा फोटो देखा for tomato soup. So I'm gonna make tomato soup and देखते हैं उसके बाद अगर मन करेगा then we'll also make Manchurian, soya chunks Manchurian. That's a lot of work, but we'll try. But अभी मुझे मन कर रहा है कि सूप पिया जाए, एकदम मस्त सा गरम सूप. So let's get into making that. Let's heat the pan. हम डालेंगे एकदम थोड़ा सा बटर. इसको थोड़ा गरम होने देंगे and then we'll add in the diced tomatoes, carrots and थोड़ा सा beetroot. Bay leaf and black pepper. This really helps to enhance the taste. We'll cover the lid ताकि ये थोड़ा अच्छे से पक जाए. Boil the soya chunks.
done, we'll strain off the water and let it cool for some time. I think this is done. We'll let this cool for some time. फिर इसको हम churn कर लेंगे. I've soaked out the excess water. अब इसमें हम डालेंगे corn flour and कुछ sauces. We'll give this a good mix. I think ये अच्छे से coat हो गया है. Let's heat the pan. We'll make it in this. पहले हमको shallow fry करना पड़ेगा. जब तक इस कढ़ाई से धुआं नहीं निकलेगा तब तक हम इसमें डालेंगे नहीं, वरना वो पैन में स्टिक हो जाता है, या वोक या कढ़ाई जो भी बोल लीजिए. आई थिंक धुआं निकल रहा है. आई डोंट नो इफ यू कैन सी हियर. लेट इट बिल्ड अप. Seems done. तो हम निकाल लेते हैं. Shallow fry is always a good alternative to deep fry. We'll reuse the same pan.
इसको चर्न कर लेते हैं. ये मिक्सचर ठंडा हो गया है. I think this is done. We'll reuse the same pan. मैंने वो सूप का जो मिक्सचर था उसको स्ट्रेन कर दिया है. Added little water also क्योंकि वो थोड़ा थिक हो गया था. Now we let this boil. Namak perfect हुआ है. Let's taste this. I think this is perfect. This is done. इसको हम उबलने देंगे. And then that will also be done. We just have to add little butter once it boils and we're good. और थोड़ा तीखा होने से अच्छा होता है, but ठीक है. इसमें अच्छे से उबाल तो आ गया है. And this is done. Let's serve it. Just cut few bread pieces ताकि ये bread crumbs का काम कर सके. So we'll just put it in the oven for 5 minutes at 180 degree.
Soup is served. Let's serve the Manchurian as well. Lunch is served. सिंपल से सिंपल चीज भी बनाओ लेकिन मेहनत तो हो ही जाती है. एंड दिस इज सूप, दिस इज मंचूरियन. आई एम होपिंग कि ये अच्छा हो. लेट्स टेस्ट इट. The soup is really nice. Salt और थोड़ा होता, but I think it's good. Let's go and enjoy it. You know those are real, right? No, they're not. Yeah, they are. He's right. They're real. But it didn't seem real. So अभी बज रहे हैं 3:30 and I just finished my so-called lunch. It was more like starter type का ही था, soup and Manchurian. अच्छा था, मेहनत लग जाती है लेकिन खाने में बस 2-5 मिनट लगता है. But nevertheless, I liked it. It was a break from the regular rice, dal या जो भी full-fledged lunch होता है. So अभी lunch is done. So I'm just going to relax now a little bit क्योंकि बहुत काम हो गया, बहुत भाग दौड़ हो गई. So yeah, now I'm going to just, close my eyes for some time and relax. So आज धूप काफ़ी है. So hopefully मेरे कपड़े, जो स्वेटर मैंने धोया था वो सूख जाएगा. So I'm glad that इतनी धूप है, but काफ़ी तेज़ धूप है अभी. But nevertheless अभी थोड़ा चाय पिया जाए and थोड़ा चाय की चुस्की लेकर थोड़ा नज़ारे का लुत्फ़ उठाया जाए. Look at the धूप. This is done. Cheers. I don't find that unusual. Is there something? What do you work about? You What ask is for the this. mask I've put on? Not the mask. What do you actually work about deeply? If What do anything. I really care about? I feel like a lot of successful people like yourself would have thought a certain thing at a certain point of time in life and voiced it. It might be of And I think it would be great to document it just as an archival thing for the family, for our children, grandchildren. Obviously, no one in the family other than me believes I there's merit to doing absolutely that. love these podcasts and I Just by love the telling guy that who to you. conducts this podcast. But there is no one. So आज था मेरा hair wash day and I feel my hair is like super oily and greasy. शायद पता नहीं चल रहा होगा इतना वीडियो में, but at least I should have taken a head bath. But then I was like, nah, कल करेंगे, too lazy
to take a head bath, because the head bath is just not taking a head bath, right? उसके बाद फिर बाल भी नहीं सूखते, because I usually avoid the dryer because बाल के state इतने अच्छे नहीं हैं unless until धूप बिल्कुल नहीं है, then only is when I use the dryer, but at least I try to have it dried automatically. तो फिर पूरा दिन उसी में चला जाता है, बाल गीले रहते हैं etc. So I think I can live with this for today, and tomorrow we'll wash it. फोटो का क्या फायदा, क्या? क्या नहीं करते, लो ये बोझा लो उतर, ओह, शॉपिंग करके आई हो कुली तुम? का बोझा उतर। क्या गाना है ना अमिताभ बच्चन, कुली का गाना। ओ माय गॉड, थक गई मैं शॉपिंग कर करके। चलो कौन नहीं बोलती। होती है जिंदगी यार, कौन खत्म नहीं लेंगे मैं। शॉपिंग 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 टाइम, आ जाओ बांटती हूँ। दान धर्म करती हूँ, नहीं हुआ तेरी, आ जाओ आ जाओ, कैमरा बंद करो, आ जाओ। नहीं ज्यादा रिकॉर्ड मत करो, What is the occasion? नथिंग, ऐसे ही प्यार से। Okay, thank you. और एक गुलाबी साड़ी का इतना गाना सुनी कि तुम्हारे लिए एक क्या गुलाबी गुलाबी साड़ी, इसलिए एक गुलाबी ड्रेस ला दी। चल If this color will not suit me, I will not take it. No, no. हाँ, पापा बोले अच्छा लगेगा लो। So मैं ये vlog को यहीं पर end कर रही हूँ. Hopefully you will like this vlog. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do subscribe to the channel and show your support. It would mean a lot to me, and hopefully you will like this vlog and see you soon. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then do like the video and subscribe to the channel. खुश रहें, खुशियाँ बांटें, keep exploring and keep discovering.